अच्छा जी, लास्ट टाइम वी स्टार्टेड आउट विद नंबर्स। हमने क्वेश्चन 2 भी कर लिया था, क्वेश्चन 3 भी कर लिया, क्वेश्चन 4 में हमने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन किया। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन 6, यूज द कैलकुलेटर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 30 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin 30। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आप कीजिएगा इसको खुद ही। जब आप कैलकुलेटर पे cos प्रेस करते हैं तो वो एक ब्रैकेट खुद से इनिशिएट कर देता है और आगे आपके पास ब्लैंक स्पेस होता है वेयर यू पुट एन एंगल। ठीक हो गया। अब तो आपने 30 पुट किया, मेक श्योर यू क्लोज द ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपने स्क्वायर नहीं लेना, यहाँ पे आपने स्क्वायर लिया तो वो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये स्क्वायर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर। उसके लिए आपको शुरू में एक ब्रैकेट लगानी है, फिर cos टाइप करेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट क्लोज की, ये वो वाली ब्रैकेट क्लोज की जो कैलकुलेटर ने खुद से इनिशिएट करनी थी जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं। तो आपने पहले वो वाली ब्रैकेट क्लोज की, फिर आपने वो ब्रैकेट क्लोज की जो आपने खुद से स्टार्ट में लगाई थी। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट वन। So this is the bracket which you initiated, तो इसको क्लोजिंग भी आपने खुद से की। अब आपने इसको स्क्वायर लेना है, बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना। इस टाइप की कैलकुलेशन का स्टार्ट आपने लेना है, तो यू कैन क्लियरली सी इट्स अ फ्रैक्शन। आगे वो जो मैंने आपको उस दिन एक मॉडल लिखवाया था, उसमें आपके पास फ्रैक्शन बटन होता है, लेफ्ट साइड पे करके ऊपर टॉप रीजन में आप फ्रैक्शन बटन को प्रेस करें और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डाटा को एंटर करें यूजिंग द कर्सर मॉडल। जी इमाम, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? अस्सलाम वालेकुम सर, यस आवाज आ रही है। ओके गुड। राइट, ठीक हो गया। तो आपने इसी तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डाटा एंटर करना है। कैलकुलेटर का मॉडल मैंने जो लिखवाया था, मैं अभी लिख देता हूँ, दिस इज द बेस्ट वन। देयर इज नो वे कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाए इसके अंदर, सो यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। 991 EX क्लासवाइज बाय KCO। ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा मोहम्मद, the one who just joined, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, how are you? Walaikum assalam. Andy, is this your first class with me or you've already taken a class? Yes, sir. This is the first time. Okay, and is it your, are you an IGCSE student or O levels? Sir, O levels. O IGCSE, levels. IGCSE. IGCSE, and you are appearing in the coming year, May June 2024? No, no, sir. Okay, okay, ठीक हो गया। And what about you, Abdul Rahman? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Walaikum salam. How are you? Are you appearing next year, like in the coming May June 2023? Yes, sir. Right. You are appearing in May June 2023. So, and you are an IGCSE student or O levels? IGCSE. IGCSE. All right, great. ठीक हो गया। All right, the next question, write the numbers in order of size with the smallest first. It's exactly the same as the one which we did. And apparently these two questions look very different. This one और ये फिर आपके पास यहाँ पर मैंने आपको भी ये क्वेश्चन दिखाया, वो फ्रैक्शंस थी, ये फ्रैक्शंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इनको कैलकुलेटर के अंदर आपने पुट करना है इन वैल्यूज को और 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज लिख लेंगे ताकि आपका टाइम ना आए। सो रूट ऑफ 10 आप लिखेंगे, जितनी भी 6 डेसिमल, जल्दी से जरा आप बताएं ईमान बेटा, रूट ऑफ 10 की वैल्यू निकाल के दिखाएं 6 डेसिमल प्लेसेस तक। Sir, I'm taking my calculator out. That would take a minute. Fine, take your time. Anyone who has the calculator handy? Anyone? Oh, yes, sir. Square root of 10 is 3.162277. Wait, so 3.16. 2277. 66.
6. Okay, so as we are writing down correct to 6 decimal places. So this is where I'm going to end. As the last digit I am writing has a number greater than 5 after it, so I'm going to round it up. So this the last digit will become 8. 22 over 7. So 3.14285. This is correct to 6 decimal places. 5. 5 की वैल्यू बताएं क्या है? 3.1415 92654. 92693 हो जाएगा ये. ठीक हो गया 6 decimal places में. So this is a 2 decimal place number. So 3.14. So I'm to put 4 zeros ahead of it to make it same. अब यहाँ से आप देखें. हाँ, we need to decide which one is the smallest one. The 3.16 is the totally different. 3.14, 3.14, 3.1. So deciding factors आपके पास क्या होंगे? Last 4 digits. जी देखें जी last 4 digits देखें. क्लियरली आपके पास 0000 होगा सबसे छोटा है. ठीक है, इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से बाय चांस टाई नहीं आता. तो क्या आ रहा? अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाते तो ये 143 लिखता है इसको और नहीं ये 142 हो जाता. इस क्वेश्चन में भी आ रहा था बाय चांस. अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहता था ये 141414 2 डेसिमल प्लेसेस तक टाई आता है. बट जैसे कि हमने उस दिन एक क्वेश्चन किया था वो 4 डेसिमल 5 डेसिमल प्लेसेस तक भी टाई आता है. सो फॉर द सेफ साइड हम डायरेक्टली 6 डेसिमल प्लेस करते हैं ताकि आप पहले स्टेप में पहले अटेम्प्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस में आपने लिखा है तो उसमें अगर टाई आ गया तो मतलब इक्वल आ गए नंबर्स तो आपको दोबारा से सारी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े क्योंकि बीच में ही राउंडिंग ऑफ भी चल रही होती है. All right, so this is the smallest one and it came from 3.14. Then next 2857 or 1593. Which one is smaller? One. ये तो आसान है चलो. पहले क्लास के स्टूडेंट्स हैं सारे. Sir, 3.141 pi की value. 5 की वजह शाबाश. Thank you. Okay, next है आपके पास 22.7. and finally you have 10. So this is how you're going to attempt this question. Alright, प्राइम नंबर से रिलेटेड ये मैंने आपको दिन बताया था. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ. यहाँ पे आपकी स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर स्किल्स चेक कर रहा है वो. कमांड वर्ड देखें आपके पास क्या है? कैलकुलेट. ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर आपकी यहाँ पे स्किल्स चेक करनी है. दिस इज इजी. अगेन यहाँ पे वही जो अभी मैंने आपको बताया था. यहाँ पे अगर किसी की मिस्टेक होगी तो वही ब्रैकेट की होगी तो लाजमी मेक श्योर यू पुट दीज ब्रैकेट्स जो खुद से आपने इनिशिएट करें क्योंकि साइन जब आप लिखेंगे एक ब्रैकेट वो खुद से लगा देगा. यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन दैट वन. ओके, नेक्स्ट है आपके पास राइट. इस पे आ जाते हैं. लोवेस्ट ऑफ दीज टेम्परेचर. ये भी आसान है. नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होता है. आमतौर पर जो सबसे बड़ा होता है नंबर नॉर्मली लाइक फॉर एग्जांपल एक 7 है. इफ आई हैव अ नंबर 7 and if I have a number 13, so if both are positive then this is the largest number here. But if both are negative तो opposite हो जाएगा. तो ये सबसे छोटा हो जाएगा फिर ये बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पे अब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? Sir, -5. -5. Very good. Next, the range of these temperatures. Range बेटा जब भी आपसे पूछे statistics में पूछे numbers में पूछे range is always highest value minus lowest
value. Range is exactly same as difference. But difference is calculated between two values, range is calculated between multiple values. ठीक हो गया? Process दोनों का same है. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेशन प्रोसेस दोनों का सेम है. यहाँ पे अब एग्जामिनर आपको कह रहा है रेंज कैलकुलेट करें. द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट टेम्परेचर 6, लोएस्ट इज -5. This is going to be 6 minus -5, which is going to be 6 plus 5, 11 आपका आंसर आ गया. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्स, बट इस क्वेश्चन में आपने लार्जेस्ट फर्स्ट लिखना है. तीन चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को से पढ़ना है. राइट ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट. अच्छा, ये आ गया एक डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन जो उस दिन हमने नहीं किया था. ओके, राइट ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड एस्टिमेट. ये एस्टिमेशन का टॉपिक है बेटा. एस्टिमेशन में क्या होता है कि आपने ये कैलकुलेटर पे नहीं इनपुट करना है, आपने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू देनी. एस्टिमेटेड वैल्यू इज गोइंग टू बी, मतलब तकरीबन वो एक्चुअल कैलकुलेटर वैल्यू के इक्वल होती है. अब उसको कैसे देना है उसने आपको खुद ही उसका तरीका बता दिया. पर ये परेशान क्यों लग रहा है, हाउ लॉन्ग आई एम सपोज्ड टू डू दिस विदाउट कैलकुलेटर. ये खुद ही तरीका बता दिया कि आपने सबसे पहले हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है. अब वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो आप लिख ली. whatever the first significant digit is. We talked about the rules of significant digits in our previous class. So you are going to write down the first significant digit. उसके बाद वाले सारे digits जीरो कर देते हैं. ठीक है, पॉइंट से पीछे वाले जो जीरोस हैं they are important. We are going to write that down. जब हम जीरो में ट्रांसफॉर्म कर देंगे सारे डिजिट्स, और जो पॉइंट के बाद वाले जीरोस हैं हम उनको नहीं लिखेंगे. एक नंबर को मैं थोड़ा सा डिटेल में करता हूं ताकि मेरी बात आपको समझ में आए. 2.65. Now this is the first significant figure. मैंने यहाँ तक लिखना है. So the number right after it is, if it is 5 or greater than 5, तो you round that up. तो इसको round up करेंगे. Point. बाकी सारे numbers क्या हो जाते हैं? Zero. Now these two zeros are after the decimal, so there is no need to write it down. So 2.65 correct to one significant figure is going to be 3. Is this clear? Okay, next. ये क्या होगा? 4.1758. ये मुझे बताएंगे मोहम्मद. ट्राई करें बेटा. सर आगे 5 से बड़ा वैल्यू 7 है तो इसको राउंड ऑफ करके हम 4.2 कर देंगे. Very good. You tried it. Excellent. अच्छा, how many digits do you see here? Significant Two. digits, other than zero. ठीक है? 2. So these are two significant. This you have rounded it up correctly up to two significant figures. If you read the question, what is the requirement? One significant figure. ठीक हो गया? तो आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से करना है. अब इसी को one significant figure में करें. One significant means first significant digit. बस वहां तक आपने लिखना है. अब्दुल रहमान, आप बताएंगे प्लीज. सर 4 होगा. 4. शाबाश. अच्छा, मोहम्मद बेटा ये देखिए, क्वेश्चन इज द नंबर इज 4.1758. दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक हो गया? ये तो आप इसको 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, वो क्या चीज डिसाइड करेगा? द वेरी नेक्स्ट डिजिट. इट इज लेस देन 5, सो इट इज गोइंग टू बी 4. पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट्स दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू 0. मतलब इस फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बाद. अब as these zeros are after the decimal, so I'm not going to write it down. So the answer is going to be 4 in this case. Plus Parisha, 7.917. 8. Very good. 8 आ गया. समझ में आया बेटा? Anyone who could not get this part, how did I round, like wrote all these number correct to one significant figure? This is very important. ये सिर्फ यहाँ पे की स्किल चेक हो रही है आपके थ्रू आउट पेपर में. जो एक्यूरेसी का नंबर होता है इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मिलता है. अगर ये क्लियर नहीं है तो बताएं.
ओके फाइन। अब यहाँ से आगे आपने इसको कैलकुलेशन करनी है। अब तो आप डेसिमल से निकल गए। अब आई थिंक इसकी कैलकुलेशन आसान है, सिंपल। इसके अंदर बिट मैच रूल अप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई। देखो पहले करना है 3 4 12 प्लस 8 एंड 12 प्लस 8 इज 20 इज गोइंग टू बी योर आंसर। याद रखिए बेटा, कैम्ब्रिज में बिट मैच रूल, कई लोग बॉड मैच रूल पढ़ते हैं, कई लोग डी मैच रूल पढ़ते हैं, बट कैम्ब्रिज में बिट मैच रूल। बॉड मैच होता है ब्रैकेट ऑर्डर, इस तरह से चीजें होती हैं। आपके पास ब्रैकेट ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में, कैम्ब्रिज के सिलेबस में देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ ब्रैकेट, तो देयर आर नॉट मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट ऑर्डर वहां पे आता है जहां पे डिफरेंट टाइप्स की ब्रैकेट्स आ जाती हैं, तो आपने पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है वो वहां पे आता है, तो वहां हम बॉड मैच रूल अप्लाई करेंगे। कुछ लोग सिर्फ डी मैच रूल करते हैं, डी मैच रूल को छोटे लेवल पर, आप लोगों के लेवल पर बिट मैच रूल है ब्रैकेट, इंडिसेस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपके पास यूज अ कैलकुलेटर, स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर यूजिंग स्केल। इसमें खुद आपको कहना है, अगर वो ये ना भी कहता ना यूज अ कैलकुलेटर, अगर ये लिखता कैलकुलेट, तो भी आपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। This is, I'm talking about IGCSE students who are going to appear in coming May June 2023। जो जिन लोगों का सॉरी नॉट 23 24, जिन्होंने 24 मई जून या फिर अक्टूबर में 24 के बाद पेपर देना है, यानी कि मई जून 2025 से ऑनवर्ड, ये एक ये तरह के क्वेश्चंस कम आएंगे, क्योंकि उसमें आईजीसीएसई में भी एक कैलकुलेटर जो है वो, एक पेपर जो है वो नॉन कैलकुलेटर हो गया। ऑलराइट, नाउ यस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन अ कैलकुलेटर, बट यहाँ क्वेश्चन को देखें क्या क्या है। शो दैट वर्किंग इज रिक्वायर्ड। अब आपने वर्किंग यहाँ पे शो करनी है। So 7/27 plus 1/7/9 is a mixed fraction. Mixed fraction को convert करें जी। अच्छा, mixed fraction को is it? Yes, sir. 9 times 1 plus 7. 16. Yeah, not yes, शाबाश। So 9 times 1 and then plus 7. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 16/9. Okay, in order to add or subtract the fractions, remember this one simple rule. Whenever you want to add or subtract multiple fractions, make sure their denominators are same. In this particular case, one of the fraction has a denominator 27 and the other fraction has a denominator 9. Okay, अब denominator same बनाने के लिए what path you use, that totally depends on you. And how can you play smart over there? मैंने जो previous lesson में आपको एक list दी थी कि these are the things which you should know by heart. वो याद होंगी तो आपका एक अच्छा होगा तरीका। अब यहाँ पे I know that 9 is a factor of 27. So all I have to do is multiply करना है मैंने 9 को किसी इस फ्रैक्शन को किसी नंबर से कि इसके डिनोमिनेटर में 27 आ जाए। So I know if I multiply this fraction with 3 in the numerator and the denominator, I will have 27. So this is going to give me 7/27. Do not use calculator. Yeah, you can use your calculator in order to multiply 16 times 3. When I say do not use calculator, do not use calculator in order to add them and directly give this answer. ठीक है, show that आपने मैथमेटिकली प्रूव करना है and he needs to see the working. So command words के ऊपर ध्यान करना है आपने, ठीक हो गया। 7/27, okay, 16 times 3 कितना होगा बेटा? 3 6 are 18, 3 1 are 3 and then 1 4. Is it 48? Yes, sir. All right. Now, once the denominators are same, you can write down the denominator once. That's it. आपको दो दफा नहीं लिखना ना, ये आपको इनको ऐड करना है, ठीक हो गया? You don't need to do that. And then numerators को simply add कर देंगे 7 plus 48. So 7 plus 48 कितना आएगा बेटा आपके पास? 55. ठीक हो गया? ये आता है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मिक्स ये देखिए जाते हैं, उसने एग्जामिनर ने मिक्स फ्रैक्शन मांगी आपसे कि आपने ये शो करना है कि अब इसको ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना कि आप इसको जो है 55/27 करें और आप बोले जी ये दोनों इक्वल हो गए, नहीं।
उसने बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे उसमें मैं बाद में बताऊंगा। दैट बिकॉज़ दैट थिंग यू आर ओनली गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू चेक इफ योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आपने इसको कैसे करना है? सिंपल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स आप करें। 27 को 57 divided by 20, 55 divided by 27, so 27 ones are 27, and how much is this going to be? This is going to be looks like I have made a mistake. 2s are 54 आ रहा है। क्या हुआ? 27 2s are 54 आ रहा है। You not use that? 27 2s are क्या आ रहा है? 54? जी सर। 54 आ रहा है, तो ये गलत किया है इसका मतलब है। फिर देखें कहाँ मिस्टेक हुई है। थ्री से मल्टीप्लाई किया, 3 ये देखें 16 टाइम्स 3 48 ही होता है। तो नहीं आपने उधर लिखा है ना 27 times 1 is 27. Can you not use 27 times 2 and then write 54? No, I'm not getting your point. What is it trying to say? सर जैसे भी आपने डिवीजन वाला किया ना, जो आप डिवाइड कर रहे हैं हाँ 5 को, तो आपने sorry. Yes. मैंने देर से आपकी बात समझी है। आप यहाँ नॉन डिवीजन में, मुझे लगा आप मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। 27 2s are 54, तो पीछे एक पॉइंट बच गया। ठीक हो गया। तो मैं आप जब बोल रही थी मेरा सारा ध्यान उधर था कि शायद वहां पे कोई मिस्टेक हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पे समझ में आया? डिवीजन क्लियर हो गया? अच्छा, पहले मैंने 1 से किया था वो बिल्कुल गलत था। अब आपने 2 से किया, यस इट इज 54, तो 27 टाइम्स 2 इज 54 था। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है? यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, 2 होल 1 over 57. This is going to be your answer. This is how you need to show. अब आपने कैलकुलेटर पे कैसे करना है बेटा? आप कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन बटन पहले प्रेस करेंगे, 55 over 27 लिखें या 55 divided by 27 लिखें। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होता है एस डी का, ठीक हो गया? उसको प्रेस करेंगे तो वो पहले डेसिमल देगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो फ्रैक्शन देगा, वाइस वर्सा। उसको प्रेस करते जाएंगे तो फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करता है। अब शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करेंगे while the calculator displays in fraction, तो वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देगा उसी का। सो उसकी इक्विवेलेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन दे देगा वो आपको। चेक करें जरा, दोज हु हैव द कैलकुलेटर राइट नाउ, कैलकुलेटर अपने पास रखिए ताकि मैं जो चीजें बताता जा रहा हूँ आपको याद भी रहे। वहां से आप अपना आंसर वेरीफाई कर लेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। Is 55 over 27 actually equals to 2 whole 1 over 27? तो वहां से आप उसको चेक कर लेंगे। अच्छा, we write down the number 3.6 less than this number. So I have a number minus 4.7. I need a number which is less than this. How much less? 3.6. Simple. इसको बोलते हैं डायरेक्टेड नंबर। कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाता है, वहां से इंक्रीज या डिक्रीज पे आता है। फॉर एग्जांपल लाजमी नहीं है तो एक जनरल फॉर्म में इसने एक नंबर को बोला है। फॉर एग्जांपल दे आर टॉकिंग अबाउट टेंपरेचर। फॉर एग्जांपल द टेंपरेचर, आगे शायद इस तरह का कोई क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल द टेंपरेचर इज minus 18 डिग्री सेल्सियस आफ्टर लेट्स से सम टाइम the temperature rises by 5. तो rises by 5 का मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें आपने 5 ऐड करना है। now here addition and subtraction of integers, the sum of integers, जो इंटीग्रल नंबर्स होते हैं उनका आपकी स्किल चेक होगी। ऑपोजिट नंबर से आपने माइनस करना है, माइनस करें 18 minus 5, ऑपोजिट साइन है, सॉरी ऑपोजिट साइन है तो आपने माइनस करना है। तो 18 minus 5 इज कितना आएगा? 30। साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले का, तो इट इज गोइंग टू बी -30। जब सेम साइंस होते हैं, अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि टेंपरेचर डिक्रीज किया है -5 डिग्री से, तो -18 करंट टेंपरेचर था, डिक्रीज मतलब -5।
अब same sign है, so you will be adding up the two numbers. So 18 and 5 is 23. You will add up the two numbers with their parent sign. ठीक हो गया? Which was negative. So minus 23 degree Celsius आ गए. इनको बोलते हैं ये डायरेक्टेड नंबर्स, ये भी आपके सिलेबस में है. इसमें सिंपल बेसिक स्किल्स चेक होती है. इसमें अगर आप मार्क्स लूज करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, because these are very easy questions. काफी आसान होते हैं. अच्छा, calculate again, focus on the command word. There is no need to show the wording. Directly put this in the calculator and work out the answer. Show that अभी हमने इससे related अभी क्वेश्चन किया, इससे भी related हम क्वेश्चन कर चुके हैं. Calculate indices वाला. Okay, which of the following is irrational? Irrational की definition के ऊपर on our lesson 1 हमने बहुत डिटेल में बात की थी. Irrational नंबर की पहचान क्या है? Can anyone help recall the definition of irrational number? So these are the numbers that are in front of you. One is 2 by 3. This is one number. Another is root of 36. This whole is one number. Root of 3 plus root of 6. 5. 0.75, 48% cube, and then 8 power 1 by 3. Can anyone help recall before you jump to selecting the number? Can anyone help recall that how would you identify the irrational number? Sir, irrational numbers are numbers that cannot be defined by p divided by q, which is a fraction, and they cannot be integers, and they have to be non-recurring. Very good. That is a definition. Very good. But if your definition is perfectly fine. But if I need to choose a number from a list of numbers, the way I have a question over here, then what would be the best way to go about it? I would convert them all to decimals. That's the long shot you are taking. Anyone else? But yeah, I'm not saying your method is going wrong. Your method is perfectly correct. Okay, if anyone else doesn't understand, she's saying that I will convert each number into decimal. If she gets a non-terminating and non-recurring number, that's how she's going to decide if a particular number is rational or irrational. But Iman, I have a question from you. What if after converting any particular number from here into decimal, for example, I get an answer as 4.31245967 and then 3124597 and keeps on going like this. Will you see a repetition here? Yes, sir. Okay, so from number 3 till number 7, there is a repetition, isn't it? So this Yes. is a group of numbers which are repeating themselves. But what if I have a calculator who has a maximum capacity of 6 digits or for example 7 digits and it is only giving me answer up till here? How would I know that numbers coming ahead are going to repeat themselves? Then what? Now, from here, if I have a good calculator or if I have a calculator who has a let's suppose 10 digits capacity, for example, then I will not go wrong about this example. I can easily pick that if there is a repetition going on or not. But if it is not, then what? Let me take Sir, you to, okay. Pi is always an irrational number, remember, okay? Whenever you have a non-square number inside the square root, that is always an irrational number. Whenever you have a non-cube number that is inside the cube root, that is always an irrational number. So, go ahead. Which one is irrational? Okay, forget about irrational. What is the first number?
Sir, a fraction. Is it rational or irrational? Sir, a rational. Is it irrational? Because it is not pi, it is not a number inside the square root, and it is not the number inside the cube root. So it is clearly a rational number. Even if it gives me something like this kind of situation, I know for sure that there is going to be a repetition. Okay? I don't need to check it. So I know for sure that it is going to be a recurring decimal. Acha, root of 36. What is inside root? Okay, root आ गया. जैसे square root आया, फौरन से alert हो गए. So there is a chance that it could be rational or irrational. So there is a chance now. ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऐसी चांस है ही नहीं था ना, रूट ही नहीं था, तो हमने डायरेक्ट आंखें बंद करके we can decide that it is rational. This one, be alert now. We have a root. Inside root, what number is it? What number do we have inside the root? Sir, it's a square number. Yes, 36. It is a square number. So, what do we conclude about this number? Rational or irrational? Sir, rational. Rational. Very good. Okay. Now, Muhammad, would you like to answer to this one? Yes, sir. Yes. Okay. Forget about root of 3 plus root of 6. Just focus on root of 3. Forget about the other part. Root of 3. Does this fit in any of these three situations? Yes, sir. Which one? Sir, sir, it's a square root. Square root. Okay. And what do we have inside the square root? In this Sir, case? 3. 3. 3. Is this a square number or non-square number? It's a non-square. Non-square number. So this part is irrational. Very good, very good, Mohammed. Excellent. Okay, so this part of a number is irrational. What about this one? Abdul Rahman. This is also irrational. The reason I'm breaking it into parts, sometimes it happens, for example, you get a question root of 3 plus root of 36. This part, this term is irrational, and this term over here is rational. Now you get confused. What is this number as a whole? Remember, irrational number plus minus any rational number is always an irrational. ठीक हो गया? तो इस केस में तो खैर by chance both of these two numbers are irrational, but if one of them is irrational and other is rational, even then you don't need to get confused. It is still an irrational number. So what do we conclude about this number? Rational or irrational? Javidia? Sir, she left. Oh, okay. It's irrational. So, yes, very good, Prisha. This is irrational. कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सामने as it is. Pi. ये क्या हो गया आपके पास? Irrational. ना ये पाई है, ना इधर स्क्वायर रूट है, ना क्यूब रूट है, तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ये सोच में पढ़ने की जरूरत है, तो ये डायरेक्टली आप उस पर लिख लेंगे. ये क्या आ गया आपके पास? रैशनल नंबर. नेक्स्ट 48, same, exactly same. ना ही 48% is a pi, ना ही यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट है, ना ही क्यूब रूट है. There is no need to worry about. डायरेक्टली क्या लिखेंगे? रैशनल. ओके, 1/3 किसी भी की नंबर की पावर हो, किसके इक्वल होता है? ईमान.
Yes, sir. किसी भी नंबर की पावर 1/3 हो, उसका क्या मतलब है? Sir, इसका मतलब I forgot. Sir, cube root. Excellent, excellent. Isn't right? Isn't it answer clear? Yes, sir. Okay, very good. Okay, देखिए बेटा, किसी, for example, you have a number x and it has a power of 1/n. फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल इंडेक्स है, और डिनोमिनेटर जो है उस इंडेक्स का, वो कोई भी हो, न्यूमरेटर के ऊपर एक कंडीशन है कि वो 1 है. Do you see it? So whatever the denominator of the fraction is, वो root बन देता है. For example, if I have x power 1/2, तो ये हो जाएगा, this is same as square root of x. If I have x power 1/3, तो ये हो जाएगा cube root of x. If I have x power 1/4, तो ये हो जाएगा fourth root of x. इसी तरीके से ईमान, अब आप मुझे बताएं x पावर 1/7 किसके इक्वल होगा? Sir, seventh, sir will just put a square root and a power 7. स्क्वायर रूट लगा के पावर 7 लेने का मतलब है रूट की पावर 7 है, ऐसे नहीं करना. 7th रूट, ठीक है? That's what I meant. I just. ओके ओके ठीक, ओके. 7th रूट ऑफ x, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा x की पावर 3/4 आ गया. हाँ जी, इसको ये किसके इक्वल होगा? Sir, fourth root of x and the 3 would be x power 3. शाबाश. जो रूट है वो 1/2 बना है, 1/3 रूट बना है, 1/4 फोर्थ रूट बना है. तो इसमें से 1/4 जो है वो फोर्थ रूट बन गया. तो x की पावर 3 एज इट इज रहेगी. ये क्लियर है बेटा? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए 8 पावर 1/3, इट्स अ क्यूब रूट. फौरन से हमें क्यूब रूट आ गया बेटा. डायरेक्ट उसमें ना ये कह लें एनक्रिप्टेड वर्जन दिया है क्यूब रूट का कि आप फौरन से इसको कैच नहीं कर पाएंगे. तो आपको मैंने बता दिया है कि क्यूब रूट की क्या निशानी है. सो दिस इज सेम एज क्यूब रूट ऑफ 8. Be alert. So what do you think of 8? Is this 8 a square number or a cube number or a non-cube number? Cube number. It's a cube number, so this is a rational number. It would have been irrational अगर ये non-cube होता. तो ये हमने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रैशनल इरेशनल का. ये थ्रू आउट आपके साथ चलना है इसने, तो इनमें ध्यान से चलना है. ओके, राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इन योर वर्किंग. ओके, यहाँ के बीच में क्या आ गया? डिविजन आ गया. पीछे हमने एडिशन वाला किया था, अब हम एक डिवीजन वाला भी कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे. हाँ जी मोहम्मद, ये कन्वर्ट करवाएं पहली फ्रैक्शन 1/5/9, इसको मुझे कन्वर्ट करवाएं. सर 9 multiplied by 1 plus 5. आंसर बताएं क्या आएगा? सर 14. 14/9. ठीक है बेटा, साथ साथ बाकी चेक करते जाइएगा. मेरा मेंटल मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है, खासतौर पे जब मैं एक प्रोसेस डिलीवर कर रहा था, जैसे कि पीछे डिवीजन में मेरे से एक मिस्टेक हो गया था. बाकी साथ साथ देखते रहा करें. 9, ओके, इधर से क्या आंसर आएगा? 9 1 9, 9 + 7 क्या हो जाएगा? 16. 16/9. 16/9. अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है? कौन बताएगा? मुझे बताएंगे अब्दुल रहमान. यस अब्दुल रहमान. रहमान आवाज आ रही है क्या? आई थिंक इज नॉट देयर. अच्छा बेटा, नेक्स्ट ये आपने ये करना है, हमेशा याद रखना है 14/9 डिवीजन के साइन को आपने हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद भी जो भी फ्रैक्शन है उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है. यहाँ से आपने आगे सिंपलीफाई करना है, कैंसिल आउट कर सकते हैं आप क्रॉस में भी. जैसे 2 7 14, 2 8 16, ये 9 9 तो कैंसिल हो गया. आपको 7/8 आंसर आ गया.
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का फिर लेसन वहां पे हम खत्म करेंगे a over b divided by c over d multiply by e over f। मुझे जरा बताएं इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। a over b multiply by d over c multiply by f over e और a over b multiply by d over c multiply by e over f। हाँ जी, कौन सा ठीक है इसमें से? तो Sir, the second one. second one is correct. Can you tell me the reason? Sir, because we're only going to change the fraction that has a division sign with it. Yes. We only change flip the fraction or reciprocate the fraction which is right after the division sign. अब आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आया, टेक्निकली तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी ई इंटू डी एफ है, तो जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये डी एफ ओवर सी ई ही बनेगा। बट आप सी ई इंटू डी एफ पहले कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू बिटमैच रूल। तो पहले आपको इसको सॉर्ट आउट करना है, इसको बाद में देखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई तो बिटमैच रूल आपने डिवीजन पहले बाद में मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो रूल आपने सिंपल याद रखना है, डिवीजन के फौरन बाद जो आपका फ्रैक्शन है, अगर आपके मल्टीपल फ्रैक्शंस आ जाती हैं, एक आधा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ इस तरीके का कम आता है लेकिन आ जाता है, यू शुड नो द रूल। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ठीक हो गया। इसकी जरा स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चन 26 का और ग्रुप में जरा इसको भेजें इसका सॉल्यूशन, और आज का लेसन यही पे ऐड करते हैं। Question 26. Which one of this is going to be the value of P? Irrational, irrational और arrangement ये सारे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। ये वाला क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। Take a quick snap of this picture. Let me know once you're done. This question is done with the snap of this question. Iman? Mohammed? Is it? Yes, sir. I took the screenshot. All right, great. Iman, are you done? Yes, sir. Parisha? Sir. Sir, I'll share The it. in my- Baba. The Baba, I didn't know you were here. You didn't even say that. Ask me a question. How No, are you, no, Baba? teacher, I just joined now. Yeah, fine. How are you? I am good. By the way, dear students, Baba is from Bangladesh. Say hi to her. Hello, everyone. All right. Okay, Baba, I didn't realize you were here. My lesson was mixed and match, English and Urdu. I hope you understood the part which I delivered in Urdu. No, no, I just joined for 10 minutes, just in the break I joined here. No problem. Okay. You came in late. Okay, that's fine. You can watch the recording later on. Okay.